name is Avantika. Today we have started with the second part of PYQ revision, that is for sociology. The exam is on 23rd, so we are going to revise again the PYQs. Okay, so here are some details for the batch. Here at Mission Abhyas, we have started the foundation batch, a full course for UGC NET and JRF for December 2022. So it's for 999, but right now we are giving you a discount. You can use the coupon code EAD Live and you will get this for 3999. So what are you waiting for? You can come and join us to our foundation course, जिसको भी अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है दिसंबर 2024 में, तो हम और आप दोनों मिलकर अभ्यास करते हैं और परीक्षा पास करेंगे. फिर इसके साथ साथ ये हमारा फाउंडेशन बैच के अलावा यू आर गेटिंग पेपर 1. अगर आपको सिर्फ पेपर 1 प्रिपेयर करना है तो आप उसको नेट के लिए पेपर 1 जस्ट 249 रुपीज़ में कर सकते हैं. ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें आप एनरोल करा सकते हैं. देन वी आर ऑफरिंग यू पेपर 1 एंड पेपर 2 जस्ट फॉर 3999. पेपर 1 एंड पेपर 2 हम आपको 3999 में ऑफर कर रहे हैं. राइट, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल. इवन देयर इज़ अ वेबसाइट मेंशन एंड द फोन numbers. If you have any doubts and queries, you can mail us, you can check our website and you can call us. Okay, so let's start with our course questions. Now yesterday we have completed 30 questions and today also we are going to complete rest of the 30 questions. So this will be like completing all main important questions of PYQ 2017 we are doing right now. Tomorrow I will be coming up with the 2018 and 2019. Maybe I'll compile all the questions and then we'll do a long discussion with the rest of the questions, right? So the first question here is, which state in India contribute highest percentage of growth of population in relationship to its share in Indian population? कौन सा स्टेट है जो कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ की पॉपुलेशन में? किससे? टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा किस स्टेट की? सो दैट इज़ बिहार. राइट, आई होप फॉर एवरी वन इट्स क्लियर. सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? ग्रोथ में. राइट, हाईएस्ट परसेंटेज हम किस में बात कर रहे हैं? ग्रोथ में. आपको याद रखना है कि ग्रोथ में बिहार इज द फर्स्ट वन इन शेयर. ठीक है, देन ओके सॉरी, हियर यू गेट द आंसर. Who talk about the positive and preventive checks of population? किसने पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर बात की है? कौन है जिसने बात की है इस बारे में? राइट, एनी आइडिया? We have already seen the answer, that is Robert Malthus. Right, किसने बात की है? रॉबर्ट माल्थस ने बात की है पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक ऑफ पॉपुलेशन. राइट, सो ही हैज़ गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन. इन्होंने कॉन्सेप्ट ही दिया था किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर. राइट, यस. सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, प्रिवेंटिव चेक एंड पॉजिटिव चेक. प्रिवेंटिव चेक वो मेजर्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं. क्या रिड्यूस करेंगे? बर्थ रेट. 1 सेकेंड. सो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो हमारे जो प्रिवेंटिव चेक हैं वो किस चीज़ को रिड्यूस करेंगे? बर्थ चेक्स रिड्यूस करते हैं. राइट, बर्थ रेट हो गया, सच एज मॉरल रेस्ट्रेंट्स हो गया, डिलेड मैरिज, बर्थ कंट्रोल, इन सबको हमारा प्रिवेंटिव चेक होता है. पॉजिटिव चेक हुआ हमारा जो फैक्टर, लाइक these are those factors that increases the death rate. Right, जो इंक्रीज कर रहे हैं क्या? डेथ रेट. सच एज डिसीजेस वॉज famine and poor living condition. This is a positive check. So here we will go with the Robert Malthus. Okay, and Robert Malthus he proposed the population growth. If it's unchecked, world outpace the food production, right, leading to the widespread increase of the poverty and famine. So he has given this proposed his theory of population growth. Right, then how many policies are there in India as per a census 2011? 2011 के सेंसस में कितने मेट्रोपोलिसेस हैं? चलो, टेल मी द आंसर. कितने हैं? एनीबडी? सो इट्स अ डेटा वी हैव टेकन फॉर 2011. ओके, वी हैव टेकन द सेंसस ऑफ 2011. एनी आइडिया कौन से हमारे पास वो है? कितने हैं? यस, सो इट्स 53. राइट, कितने मेट्रोपोलिसेस हैं? 53 एज पर द सेंसस ऑफ 2011.
11, ठीक है. जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, Pune, among others. Each of these cities are, have a significant impact on regional economy and the culture. So all these cities are having effects on the economy and the culture. Metropolis cities, metropolitan cities are the critical in urban planning. They're very critical in urban plannings and development, as they require the executive and extensive techniques and infrastructure services and governance to manage the large populations and densities. Okay. Okay. So Durkheim believes society as, इन्होंने क्या believe, इमाइल दरखाइम ने क्या believe किया था, society क्या है. He believes society is what? It says नॉर्मल. उनके अकॉर्डिंग क्या है, सोसाइटी एक नॉर्मल पार्ट है. हम नॉर्मली इन द सोसाइटी हो रहे हैं, एंड ही फिगर्ड आउट दैट इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल. So Emile Durkheim, society could be understood through the normal phenomena and rather than simply and personal or individual act. According to him, it's a normal phenomena of the society. Okay, so the Durkheim, for the Durkheim, you have to remember his important works like the Division of Labor. You can remember this work, Division of Labor. Okay, this he has given in 1893. Then you can remember we are talking about the society. So his work is Society, which he has given in 1897. Then his work is Education and Sociology. You are preparing for your subject, so Education and Sociology he has given, right? So in which year, 1922, he has given. The rules of sociological method he has given in 1895. So you can remember this, the rules of sociological method, right? He has given in 1895. Okay, see the order, if nowadays order also comes. So first is Division of Labor, that is 1893. And the second is Rules and Sociological Method, 1895, right? Then again there is one more book that is on the normality of crime, that came in 1895. Okay, so Rules of Sociological Method is in 1895, and wait, I'll write if you all want. So over here, on the normality of crime. So this is in 1895. ये भी इन्होंने 1895 में दी थी. उसके बाद आई है Society 1897. Then one other book is there, The Prohibition of Incest and Its Origin. It is in 1897. So both are in the same year. Education and Sociology is in 1892. Elementary Form of Religion is in 1912. Okay, and Moral Education is the last book which he gave in 1925. Okay, then now third question is based on the assertion and reason. As per a census estimate, about 1/4 of male and 1/5 female remain unmarried in India. हमारा सेंसस बोलता है कि 1/4 ऑफ मेल एंड 1/4 ऑफ फीमेल हैं जो अनमैरिड हैं इंडिया में, राइट? दे आर अनमैरिड. एंड व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज देर इज़ अ लो सेक्स रेशियो इन इंडिया. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? लाइक फर्स्ट इज both A and R is the correct, like R is the correct explanation for A. Second is both A and R is correct, but R is not a correct explanation of A. C is A is true and R, but R is false. Fourth is A is false but R is true. So anybody who can give me the answer for this, what is the reason behind it? Which is the option? Yeah, so A and R is correct but R is not a correct explanation. Census के according क्या है, 1/4 of male जो है और 1/5 of female वो unmarried है इंडिया में, but there is a low sex ratio. This is not related to this. This is not a correct explanation. Okay, now again it happens. I want answers from all of you, but it is happening every time. According to National Crime Record Bureau, NCRB, which state in India is the highest rate of drug related suicide? ड्रग से रिलेटेड सुसाइड किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होते हैं? केरला में सबसे ज़्यादा होते हैं. बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं तो केरला में सबसे ज़्यादा होते हैं. आई थिंक मे बी इट्स केरला ओनली. या देन just give me 1 second. Okay, I'll just give you the confirmation on this question.
at the end of the class, or maybe I'll just post that in the, I'll just tag you in the chat box regarding this. Okay, yes. Now second question, fourth question we'll see, that is 37, because I have just put it in the order because we were doing 2070, so I have just put it in the order for the questions. Okay, so assertion is overwhelming majority of criminals are males in Indian prisons. Reason is usually women are victims of crime and are not involved in committing the crime. तो पहला क्या है, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स हैं वो क्या है, मेल्स हैं. कहाँ पे, इंडियन प्रिजन्स में, जेल में. ठीक है. रीज़न इसका ये है कि वुमेन्स जो हैं आर विक्टिम ऑफ क्राइम, वो विक्टिम हैं बट नॉट इन्वॉल्व इन कमिटिंग द क्राइम, लाइक वो कमिट करने में इन्वॉल्व नहीं है. ऐसा क्या सही है, ए ट्रू है आर फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मतलब मेजॉरिटी पीपल्स हैं मेल इंडियन प्रिजन्स बट वुमेन विक्टिम है बट वो क्राइम में कमिट नहीं है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट. ओके. Which religion group has the highest percentage of drug users in India as recent NSSO survey? किस रिलीजन ग्रुप का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है ड्रग यूजर्स इन इंडिया? सबसे ज़्यादा ड्रग यूजर्स किस रिलीजन ग्रुप के हैं? सो दैट इज़ क्रिश्चियंस के सबसे ज़्यादा ड्रग यूजर्स हैं. ठीक है. देन ड्रग एडिक्शन इज़ मोर प्रेवलेंट अमंग द लो इनकम ग्रुप. दे आर मोर स्ट्रेस्ड एंड हैव सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन लाइफ. सो जो ड्रग एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कहाँ पे, लो इनकम ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में. इसका रीज़न ये है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं एंड हैव मैनी सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इन लाइफ. उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. सो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है. राइट. सो क्यों होता है ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा? क्योंकि नीचे तबके के जो लोग होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. सो दे वर लाइक एडिक्टेड टू द ड्रग एडिक्शंस. ओके. हु हैज़ रिटन द बुक नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप? रेनहर्ड बेंडिक्स ने ये बुक लिखी है. ठीक है, किसने लिखी है? रेनहर्ड बेंडिक्स ने ये बुक लिखी है, नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप. सो दिस बुक नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप was written by Reinhard Bendix and he is a German American sociologist, right? He is a German American sociologist. His work was published in 1964 में इन्होंने पब्लिश किया था. इन्होंने एग्जामिन किया है नेशन बिल्डिंग के बारे में. राइट. वेरियस कंट्रीज़ में हाउ सोसाइटी फोकस एंड इंट्रीगेट्स, कैसे सोसाइटी फोकस करती हैं, इंट्रीगेट करती हैं पॉपुलेशन को. राइट. नेशनल आइडेंटिटी के लिए. ठीक है. यस. इज देयर एनी डाउट्स? ओके. Now next question is, who has applied Robert Redfield concept of little and great tradition in understanding the Indian society? किसने अप्लाई किया है रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए? मिल्टन सिंगर हैं, सेकंड इज एम.एन. श्रीनिवासन, थर्ड इज एस.सी. दुबे और फोर्थ वन इज योगेश अटल. क्या सही आंसर है, किसने किया है? करेक्ट. सो इट्स मिल्टन सिंगर ने किया है. क्या किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है लिटिल एंड द ग्रेट ट्रेडिशन. इन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए किया हुआ. ठीक है. किसको समझने के लिए किया हुआ है? सोसाइटी को समझने के लिए किया हुआ है. इन्होंने सोसाइटी को समझा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Just check with this. According to Yogendra Singh, subcultural westernization is, Yogendra Singh के according subcultural westernization क्या होता है? An eclectic and fragmentary process of acculturation, an electric and fragmentary process of cultural assimilation, an aesthetic and fragmentary process of cultural lack, and aesthetic and fragmentary process of cultural complex. क्या है? What is this? According to Yogendra Singh, Yogendra Singh is a subcultural westernization. ये है योगेंद्र सिंह ने डिस्क्राइब किया है किसको? एन इलेक्ट्रिक एंड फ्रेगमेंट्री प्रोसेस ऑफ कल्चरल assimilation. Right? So you have to remember that he has defined this concept. ये concept जो है वो किस चीज़ को refer करता है? How certain the segments of Indian society selectively adapt, कैसे वो particularly किसी चीज़ों को adapt करती हैं. Right? किस तरीके से वो अडेप्ट करती हैं. तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस दी सोसाइटी. दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस सोसाइटी.
यस ओके. सो फैक्टर्स जैसे कि फैक्टर्स लाइक अर्बनाइजेशन. ओके, अर्बनाइजेशन हो गया. फिर फैक्टर्स लाइक सोशल क्लास. So social class, urbanization, exposure to western education and media, so this was all affected by the subcultural westernization. So according to him, the n fragmentary of acculturation is the correct answer. Then who is said to be the secularism is a sub process of modernization of Indian society. किसके अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म जो है वो मॉडर्न सोसाइटी का सब प्रोसेस है, मॉडर्नाइजेशन इंडियन सोसाइटी का. किसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं? या देसाई, योगेंद्र सिंह, टी.के. ओमेन एंड एम.एन. श्रीनिवासन. किसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि सेकुलरिज्म इज अ सब प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी? सेकुलरिज्म क्या है? एक सब प्रोसेस है किसके लिए? मॉडर्नाइजेशन. जो कि किसने बोला हुआ है, किसका कॉन्सेप्ट है? ये योगेंद्र सिंह का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, उन्होंने इस चीज़ में एनालाइज किया है कि योगी सिंह आर्ग्यूड दैट सेकुलरिज्म इन इंडिया इज इंटरवाइंड विद द ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, ही सॉ कि सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट एज अ प्रिंसिपल. उन्होंने देखा कि ये एक जस्ट प्रिंसिपल नहीं है ऑफ स्टेट क्राफ्टिंग समथिंग, बट इट इज़ एन ट्रांसफॉर्मेटिव कल्चर, राइट? इट्स अ प्रैक्टिस एंड इट्स अ रिलीजन बिलीफ फॉर द पीपल. So these views recognize that in Indian society modernize, it experiences a shift towards secular values. What does it experience? It experiences the shift toward the secular values, and although this process is complex, though it is condensed. Okay, so the correct answer is Yogendra Singh. Who among the following is, while dealing with the globalization, give importance to network society? किसने नेटवर्क सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा डील किया है, इम्पोर्टेंस दी है नेटवर्क सोसाइटी को लेके? मैनुअल कैसल्स, जिगमेंट बॉमन, जोगर हबमास एंड यूलिक बेक. सो किसने इम्पोर्टेंस दिया है इसके बारे में? किसके बारे में? नेटवर्क सोसाइटी की बात की है. नेटवर्क सोसाइटी एंड ग्लोबलाइजेशन किसने दिया है? किसी को याद है? मैनुअल कैसल्स ने. सो मैनुअल कैसल्स एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है कॉन्सेप्ट नेटवर्क सोसाइटी के बारे में. नेटवर्क सोसाइटी इज़ डीलिंग विद दी ग्लोबलाइजेशन. किससे डील होता है? ग्लोबलाइजेशन से डील होता है. ठीक है, इनका मेन एनालिसिस है कि रोल ऑफ आईसीटी, जो आईसीटी है, आईसीटी आपका सब्जेक्ट भी है पेपर 1 का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कैसे शेप करता है न्यू फॉर्म्स of social organization. He described that the network society एक social structure है. It's a social structure that is based on the network. वो किसके ऊपर based है? ये networks के ऊपर based है, जो कि digital communication होता है हमारा टेक्नोलॉजी से. Where it became a key component of social organization, जहाँ पे ये most important key component बनना है socialization का, economic activity का and cultural interactions. ठीक है, so you have to remember that this concept is dealing, network society deal with the manual castles. Okay, now the next question is, the central features of postmodernity is a way work and production have given way to consumption, both as linchpin of social cohesion and source of individual identity. Who among the following support this idea in dealing with the globalization? किसने इस चीज़ को support किया है? Right? Who has like followed it? Even any idea? You have an option: Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman and Manuel Castells. किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? किसने बोला है कि दैट सेंट्रल फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी एक तरीके का वर्क है, प्रोडक्शन है, हैव गिवन द वे कंजम्पशन बोथ एज एन लिंचपिन एंड सोशल कोहेशन एंड द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एंड दिस इज डीलिंग विद द ग्लोबलाइजेशन. या जिगमुंट बॉमन ने दिया, राइट? ही इज ऑल्सो अ सोशियोलॉजिस्ट हु सपोर्ट द आइडिया ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी. ही सपोर्ट द आइडिया ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी. Okay, and also he has like work and production have given the way of consumption according to him. So this, so Bauman argued that the era of late modernity और post modernity, जो era है late modernity और post modernity का, कंज्यूमरिज्म बिकम अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. वहाँ पे कंज्यूमरिज्म जो है वो इन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बना है, जिसने क्या किया सोसाइटी में, जहाँ पे इंडिविजुअल्स आर मोर फोकस ऑन कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस. ओके,
Which one of the following scheme is not included under the universalization of elementary education scheme UEE? कौन नहीं include होता है इसमें? Then you have in first option is the scheme for providing quality education in madrasa, education guarantees scheme, alternative and innovation education, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय and the सर्व शिक्षा अभियान, right? So कौन सा स्कीम है जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम में इंक्लूड नहीं की गई है? सो दैट इज़ द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में इंक्लूड नहीं की गई है. यू हैव टू रिमेंबर रेस्ट ऑल आर इंक्लूडेड बट दिस स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर. सो you can learn these three of the schemes and this first one is skipped, so you have to remember this, that this scheme for providing quality education in madrasa is not included in the universalization of elementary education scheme. Okay, now we are talking about the views. अब हम views की बात करेंगे. ठीक है, किसके views की बात करनी है हमें? Whose view that enactment of the secular ideal in constitution does not imply an actual conformity to its norm in public life and relationship between major Indian committees. किसके अकॉर्डिंग, किसके व्यूज़ हैं कि सेकुलर आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई नहीं होते हैं एक्चुअल कन्फॉर्मिटी में, उसके नॉर्म्स वगैरह, और लाइफ एंड रिलेशनशिप बिटवीन मेजर इंडियन कम्युनिटीज़. सो SC दुबे, MN श्रीनिवासन, योगेंद्र सिंह एंड अजीत के टांडा. योगेंद्र सिंह. ओके, yeah. Now we have authors and the books. Who has written which books? So Apartai Arjun, his book is, I think it's this way it's written, A.G. Frank, Erdal G and Vandana Shiva. So this is, I think it's not written in the correct order, right? So it's modernity, right? So first is, that is Apartai Arjun, modernity at large. Yes. Then A.G. Frank has given a reorient and global economy. Yes. Then G. Midrils has written the Asian drama. Yes. And Vandana Shiva is Stolen Harvest. So you can remember this book, Modernity at Large, is by Arjun Appadurai, and Reorient Global Economy by A.G. Frank, and Stolen Harvest is by Vandana Shiva, and Asian Drama is by G. Mitchell. Okay, remember the book because books are important and they always the books are asked. So Reorient challenges the ट्रेडिशनल नेटिव. रीओरिएंट द ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो ट्रेडिशनल नेटिव्स के बारे में बात करती है, वेस्टर्न डोमिनेंस जैसे ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना हाईलाइट हुआ है. और एशियन ड्रामा जो है बुक जो है वो क्रिटिकली एग्जामिन करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का एशिया में. ठीक है, तो वंदना शिवा ने स्टोलन हार्वेस्ट लिखी है जहाँ पे वो पावरफुल क्रिटिक प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से रिलेटेड. ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी. In the post-green revolution, farmer used the mechanism of debt and attachment to discipline labor and to recompose the labor market, which led to depolarization of labor. Whose statement is this? किसका statement है ये? Paul Brass, Tom Brass, Andre Bethel and A.R. Desai. किसका statement है ये? Tom Brass का. करेक्ट. तो स्टेटमेंट जो है वो टॉम ब्रास का है. टॉम ब्रास एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एग्रेरियन लेबर के बारे में बात की थी. उनका रिलेशनशिप कैसा है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट रूरल सोसाइटीज़ में. ठीक है, तो उस समय पर्टिकुलरली उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी. ग्रीन रेवोल्यूशन कब से कब तक का था पीरियड उसका? 1960s एंड 1970s. यू कैन रिमेंबर दिस फॉर 1970s. This is for the green revolution. Okay, era for the green revolution. And when agriculture productivity was significantly increasing in the countries like India because in India we have adapted the high yield varieties of seeds and chemical fertilizer, irrigation techniques we have used. While this revolution increases the food production. इससे क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगा और इसका इम्पैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में आया. लेबर
रिलेशनशिप में आया, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन ऑफ लेबर क्या होता है, अगर आपको समझना है, डीपोलराइजेशन जो प्रोसेस वेयर द लेबर आर डिस्पोज्ड और फर्दर मार्जिनलाइज, जहाँ पे वो डिस्पोज ऑफ मार्जिनलाइज होते हैं विद इन दी लेबर मार्केट के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मेनी जो फार्मर्स इन पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के समय क्या था, एग्रीकल्चर जो स्मॉल फार्मर्स थे और एग्रीकल्चर लेबर्स थे वो ट्रैप्ड हो गए थे, साइकिल मतलब डेथ की साइकिल में वो ट्रैप्ड हो गए थे, उनका बहुत ज़्यादा उधार हो चुका था और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो रहा था, इनपुट्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट में लग रहे थे, जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, उसकी वजह से मार्केट प्राइस क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी, ठीक है। नेम द मूवमेंट विच हैज़ अ कम्यूनल एंड इकोनॉमिक रूट्स, दैट इज मोपला मूवमेंट। मोपला मूवमेंट्स में क्या था, कम्यूनल और इकोनॉमिक रूट से रिलेटेड कौन सा मूवमेंट है, मोपला मूवमेंट्स। मोपला मूवमेंट्स वॉज सिग्निफिकेंट, इट अकर्ड, कहाँ पे अकर्ड हुआ था ये, मालाबार रीजन, राइट। मालाबार रीजन कहाँ पे है, प्रेजेंट डे आज का केरला है, ठीक है। कब हुआ था, 20th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। और द मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज कम्यूनल एंड इकोनॉमिक रूट्स, ओके। इस मूवमेंट्स को हम बोलते हैं कम्यूनल एंड इकोनॉमिक रूट्स। तो रीज़न जो है मालाबार, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्किकल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लैंड टेन्योर सिस्टम था, ठीक है। तो वेयर मोपला हु वर्क्स द लैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेंट था, जहाँ पे जो लैंड है वे सब्जेक्टेड हैवी रेंट, बहुत ज़्यादा उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। सो दिस कॉज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, एविक्शंस, द ग्राउंड वर्क वर ग्रोइंग अमंग दी मोपलास। इस वजह से कम्यूनल रूट्स पे आपका ये मूवमेंट हुआ था, ठीक है। मोपरा रेबेलियन, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द डेट, इट्स 1921 में हुआ था, ठीक है। सो 1921 में ड्यूरिंग व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट, इफ़ यू विल बी टेकिंग, इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री और समथिंग, खिलाफत मूवमेंट, सो खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशंस वर गोइंग ऑन एंड द मोपलास वाज इंस्पायर्ड बाय दीज मूवमेंट्स, वो इन मूवमेंट से इंस्पायर हुए थे एंड मोटिवेटेड, उनको मोटिवेट किया इट्स ओन ग्रीवियंस, एंड उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ ये मूवमेंट किया था, ठीक है। सो ब्रिटिश रिस्पॉन्सेस वर वेरी ब्रूटल, द रेबेलियन वाज, military forces was there, and which was leading to the large scale loss of life, harsh reprisals against the Mopla's communities. So Mopla movement is an example, it's a biggest example for the how economic exploitation can lead to the broader and social political condition in the communal conflicts, okay. Now Punjab peasants in prosperity and death, विजडम एंड वेस्ट इन पंजाब विलेज वॉज ऑथर्ड बाय, किसने लिखी है ये बुक, माल्कम एल डार्लिंग ने ये बुक दी है, द पंजाब पीजेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेथ, विजडम एंड वेस्ट इन पंजाब विलेज, जो कि बाय माल्कम एल डार्लिंग, ठीक है। ये भी बुक इन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ही दी थी, इनका मेजर वर्क है ये, ठीक है। बाकी आपके पास ऑप्शन थे बेडन पोवेल, F.G. बेले एंड आई नटराजन। Again it happens. Now the struggle for reduction of landlord share of the produce from half to 1/3 is related to तेभागा movement. किससे related है, तेभागा movement से related है। किसका लैंड शेयर जो था, लैंडलॉर्ड का जो शेयर था प्रोड्यूस से, वो 1/2 to 1/3 से रिलेट करता है, किसमें हुआ था, 1/2 to 1/3 इस तेभागा, ओके। Who among the following introduced the post industrial society, को किसने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज डेनियल बेल। डेनियल बेल थे जिन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था, डेनियल बेल। ही इज़ एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड ही हैज़ कॉइन्ड द टर्म पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। इनका जो वर्क है वो है कमिंग of post industrial society, ये इनका वर्क है, ठीक है। द वेंचर ऑफ सोशल फोरकास्टिंग भी इन्होंने पब्लिश की थी, एक और इनकी बुक है द वेंचर ऑफ सोशल फोरकास्टिंग, इन्होंने 1973 में पब्लिश की, ठीक है। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब क्या हुआ कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज वो है जहाँ पे इकोनॉमी ट्रांजेक्शन कहाँ से होता है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी टू वन दैट इज सर्विस ओरिएंटेड, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस ओरिएंटेड होता
होती है विथ एन इंक्रीज एम्फेसिस, जो हम बहुत ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करते हैं, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। So another question, in an industrial society the rate of society is significantly higher in the peasant society and the reason is, इसका क्या reason है, the autonomy of individual increase with the increasing division of labor। क्या यही सही आंसर है? So C, A और R दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अगर सुसाइड रेट बढ़ रहा है, पीजेंट सोसाइटी से ज़्यादा बढ़ रहा है, सोसाइटी सिग्निफिकेंटली हायर देन पीजेंट, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज़्यादा सुसाइड हो रहा है किसके, पीजेंट सोसाइटी के रिगार्डिंग, और ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग डिविजन ऑफ लेबर, करेक्ट दोनों है, बट एक्सप्लेनेशन, रीजन और असर्शन दोनों मैच नहीं करता है, एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट, ओके। सो रूरल अर्बन माइग्रेशन दैट इज लेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज अ मेनली कॉन्सिक्वेंस, किसका कॉन्सिक्वेंस है, बोथ पुश एंड पुल फैक्टर्स का, ठीक है। सो ये दोनों जो हैं वो पुश और पुल फैक्टर्स के सिग्निफिकेंस है। पुश फैक्टर्स आर कंडीशंस, वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पीपल लीव रूरल एरिया, जहाँ पे लोग जो हैं वो रूरल एरिया छोड़ देते हैं। इंडिया में कॉमन पुश फैक्टर जो है वो इंक्लूड करता है पॉवर्टी, बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ लेवल ऑफ पॉवर्टी होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फार्मर्स बहुत ज़्यादा लो क्रॉप यील्ड होता है, पुअर सॉइल है, कभी भी बारिश होती है, इट्स नॉट डिपेंड्स, सो इट्स better for them to move to cities, okay, for their economic prospects, so that is the push factor, okay, and the pull factor are the condition that attract, जो किसको attract करती है, people of urban areas in, ठीक है। जो push factor होता है, pull factor जो होता है वो urban areas के लोगों को बहुत ज़्यादा attract करती है। एक सेकेंड, यहाँ पे push के बारे में it's mainly urban is pull, okay, you can remember in this way, okay। when migration to urban areas exceed the rate of industrialization in city, it is a state of, जहाँ कब होता है, जब माइग्रेशन होने लगता है, लोग शिफ्ट होने लगते हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट बढ़ा देता है सिटियों में, तो ये कौन सा स्टेट हो जाता है, क्या बोलते हैं हम इस चीज़ को, ओवर अर्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं, ओवर अर्बनाइजेशन। ये तब अकर होता है व्हेन द रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ग्रो, जब जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जो होती है उसकी जो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ करती है, राइट, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फेज होता है ना वो सरपास कर देती है। सो इट मेनली लीड टू द प्रॉब्लम सच एज इनएडिक्वेट, फिर वहाँ पे पर्याप्त घर नहीं है रहने के लिए, राइट, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, सर्विसेज उतनी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और पब्लिक यूटिलिटीज़ कम हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिंपली ले सकते हो इन सिटीज़ जैसे कि मुंबई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रैपिड माइग्रेशन होता है, रूरल एरियाज से ओवर अर्बनाइजेशन हो जाता है मुंबई में, तो जहाँ पे सिटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ओवर क्राउड हो जाता है, स्लम एरिया बढ़ रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब इनएडिक्वेट सैनिटेशन है, ठीक है। सो दिस, तो आप देखते हो ना वहाँ पे मुंबई का एक फेमस एरिया है धारावी, इट्स अ स्लम एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आप देखोगे इज़ अ कंजेशन, पुअर लिविंग कंडीशन है वहाँ लोगों की, किस वजह से, क्योंकि ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन है, and that increase the city capacity over the essential services. So this is over urbanization. In this famous book, The Theory of Leisure Class, Thorstein Veblen has classified leisure class into, तो थॉर्स्टीन वेबलिन की बुक है, आप बुक का नाम पहले याद कर लो, द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास। इन्होंने क्या क्लासीफाई किया है, द स्लेव एंड द फ्री मैन, the bourgeois and the proletariat, the savages, the barbarian and the civilized, and the right and the poor folk। किसके बारे में इन्होंने इस बुक में बात की है, to about whom he has talked about it।
savages, the barbarian and the civilized, right? So वेबलन ने क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट किया है सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स का, और उन्होंने उस चीज़ को क्लासीफाई किसमें किया है, सैवेजेस, बारबेरियन एंड सिविलाइज्ड पीपल में। इन्होंने ये टर्म यूज़ किया है वेबलन ने, सैवेजेस, इस टर्म को उन्होंने डिस्क्राइब किया है अर्ली सोसाइटीज से रिलेटेड, जहाँ पे वेल्थ और स्टेटस डेमोस्ट्रेट हो रहा है कॉन्सुपिशियस कंजम्पशंस के थ्रू, राइट? पावर मोस्टली सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे है। बारबेरियम जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सोसाइटीज़ दैट हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, जहाँ पे सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है, वेल्थ और स्टेटस शो करते हैं थ्रू द वेरियस लग्जरी एंड सोशल प्रैक्टिसेस। And civilized is a Veblen framework which he used to advocate society where the leisure class is characterized by the consumption and civilized societies are marked by the higher degree of इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, राइट? सो इन्होंने इस बारे में बात की है, सैवेजेस, बारबेरियन एंड सिविलाइज्ड। सो वेबलन का कॉन्टेक्स्ट आता है फ्यूडल क्लास में, अर्ली ट्राइबल सोसाइटी एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो अर्ली ट्राइबल सोसाइटीज़ आर रिलेटेड टू सैवेजेस, बारबेरियंस को इन्होंने फ्यूडल सोसाइटीज़ पे बात की है, सिविलाइज्ड आर कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो वेबलन एनालिसिस इज मेनली फोकस हाउ सोशल स्टेटस and class distinctions are maintained and communicated through the consumption and leisure activities. So that's why it's a theory of leisure class. उन्होंने leisure class का communication social status का comparison करते हुए reflect किया है, वो भी economic और social dynamics को देखते हुए, ठीक है? Who said that three basic principles of authentic development are justice, sustainability and inclusiveness? किसने बोला है? ड्यूप्लेसीज, डेविड कॉटन एंड ए गुंडर फ्रैंक एंड अमृत सेन। किसने बोला है ये? हु सेड दैट द थ्री बेसिक प्रिंसिपल हैं ऑथेंटिक डेवलपमेंट के? पहला जस्टिस है, दूसरा सस्टेनेबिलिटी है, तीसरा इंक्लूसिवनेस है। एनी आइडियाज? Yeah, David Cotton. He is a well-known scholar and he advocated for more humans and equitable development practices, right? And इन्होंने बोला है about the three main principles, that is justice, sustainability and inclusiveness, right? Okay, so justice is all, ये तीनों चीज़ें important है, इनका approach है, these are for the economic growth and which focus on social, economic and ethical consideration. Okay. Which one of the following theories argues that poverty is a direct consequences of evolution of international political economy into a fairly rigid division of labor which favored rich and marginalized the poor? किसने बोला है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, लिबरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है और पोस्ट मॉडर्निज्म। So this is all about the world system theory. Okay, so theory that argues the poverty एक direct consequence है, वो world system theory है। world system theory जो है वो आपके इमैनुअल वॉलस्टीन ने डेवलप की थी, ठीक है? तो वो भी कब की थी? 1970s में की थी, ठीक है? उन्होंने डिवाइड किया है सोसाइटी को कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी, और ये पूरा डिवीजन जो है उनका बेस्ड किसके ऊपर है? ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है? ओके, सो दिस व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट, ठीक है? अब है कोर कंट्रीज जो कि डेवलप्ड है, इकोनॉमी पावरफुल नेशन दैट इज कोर कंट्री, पेरिफेरी जो है दे आर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है? एंड सेमी जो है वो आर इन बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी, दैट इज सेमी पेरिफेरी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑफ गांधी डेवलपमेंट, किसके व्यू हैं गांधी डेवलपमेंट के? कौन से हैं जो गांधी के उसको फोकस करते हैं, राइट? सो दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट ओवर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट ऑफ फ्री मार्केट, सेंट्रलाइज प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इनमें से कौन से व्यूज़ हैं? वेदर ए और डी, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट ओवर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, और डेवलपमेंट ऑफ फ्री मार्केट, सेंट्रलाइज प्लानिंग, और इट वुड बी डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज और सेंट्रलाइज प्लानिंग। So this is self-development over material prosperity and development of free market. So all these are correct answers. Got it, everyone?
Now these are the few concepts and the authors. Again, you got this theory. So world system theory, we have already seen that this I. Wallerstein. Self-development, liberal and human development is by self-development itself shows that Mahatma Gandhi, right? Yes or no? Then liberal goes with G. Watson, and human development is by Mehboob-ul Haq. So please learn this concept and authors. It's important for the exam point of view. Now, core always developed by exploiting its periphery and semi-periphery. Terms of trade are determined by core. So whether A and R is correct or it's a correct explanation, whether it's both are correct but it's not a correct explanation. A is true, R is false, and A is false and R is true. So both are correct because see, they both are interconnected with each other. See, the core and core. So whenever you have to find, just see the relationship between both the reason and assumption. Core always developed by exploiting a periphery and semi-periphery, and the terms of trade, how they are determined, they are determined by the core. So I think this is the last question. The best method of estimating birth and death rate and the rate of natural increase from census data was provided by whom? किसने provide किया था? किसका estimate birth and death rate का और rate of natural increase? J.R. Rayleigh. Okay. Who has provided this? This is provided by J.R. Rayleigh. Okay. Yeah. So that's it for today, everyone. You can join my Telegram channel over there. You can find the notes. You can download the Mission Abhyas app. We have launched our courses for the other PGT DSSP exam also. Even you can join the sociology batch, the foundation batch for December 2024. There we will be discussing all the units. We are going to do previous year question, the mock test and all. Okay. And again tomorrow we are going to meet at the same time with a PYQ series. We are going to continue with the, I think, 2018 question paper, right? So I'll try to bring more question. Even I will be adding some of the important concept of the authors and their books. Okay. So that's it. Thank you everyone. Have a good day.